what is conducting system of the heart? इन हाइपोनेट्रीमिया जैसे मैंने अभी आपको जनरली बताया, वील डिस्कस हाइपोनेट्रीमिया में भी डीपोलराइजेशन नहीं होगी बिकॉज सोडियम इज रिलेटेड टू डीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन बाद कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो उसमें द हार्ट विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली. ऑलराइट, नाउ बट जो हम एबनॉर्मेलिटीज हैं कुछ वो आगे डिस्कस करेंगे. मैंने आपको जनरली बताया, अभी मैं आपको नॉर्मल चीजें बताती हूँ. सो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स लेटर इंशाल्लाह. नाउ वी कम टू द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, व्हाट इज इट? इट इज अ सिस्टम ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स. दीज आर नॉट नर्व्स, दीज आर स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स जिनके दो फंक्शंस हैं. नंबर वन, दे जनरेट इम्पल्सेस. एक तो इम्पल्सेस को शुरू करते हैं, जनरेट करते हैं. नंबर टू, दे कंडक्ट इम्पल्सेस थ्रू आउट द हार्ट. सो कंडक्शन के दो फंक्शन है, एक इम्पल्सेस जनरेट करना और फिर उन इम्पल्सेस को पूरे हार्ट तक पहुंचाना. सो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम? नंबर वन, मैं अभी उनके नाम पढ़ती हूँ, देन आई ब्रीफली टेल यू अबाउट द फंक्शंस. नंबर वन इज अ साइनोएट्रियल नोड व्हिच एक्ट्स एज अ नॉर्मल पेसमेकर ऑफ द हार्ट. उसके बाद आता है AV node. AV node is both SA node and AV node are located in the atrium. AV node के बाद आगे जो structure आता है that is known as the AV bundle, also known as bundle of His. Bundle of His आगे जाके divide होके दो branches बनाता है जिनको right bundle branch और left bundle branch कहते हैं. राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच आगे नीचे हार्ट के एपेक्स की तरफ ट्रैवल करती हैं और वहां जाके वो छोटी छोटी ब्रांचेस देती हैं. और ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं, they are known as Purkinje fibers. And the Purkinje fibers are the fibers, or they are part of the conducting system that are responsible for transmitting the electrical impulse to the ventricular muscle. ये बात याद रखिएगा, आप पे MCQ आया हुआ है. उन्होंने एक MCQ के अंदर बराबर अली में दिया हुआ है. एक MCQ के अंदर उन्होंने जो कंडक्टिंग सिस्टम के जितने पार्ट्स हैं सबके नाम लिखे हुए हैं और उसके बाद पूछा हुआ है कि which part of the conducting system conducts impulses directly to the ventricular muscle. So the answer is Purkinje fibers. आमतौर पर इससे लोग क्या समझते हैं, AV नोड के बाद जो AV बंडल और वेंट्रिकल शुरू हो जाता है तो वो समझते हैं शायद यहीं से जो इम्पल्स है वो हार्ट मसल के अंदर जाना शुरू होगी. नो, the AV node will give rise to AV bundle. AV bundle right और left bundle branches में जाएगा. राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस फिर Purkinje fibers देंगे. जहां तक इम्पल्स सिर्फ कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर ट्रैवल करी थी वो वेंट्रिकुलर मसल के अंदर नहीं पहुंची थी. जब तक Purkinje fibers नहीं बनेंगे, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस डिवाइड होकर Purkinje fibers नहीं बनाएंगी, उस वक्त तक जो कार्डियक इम्पल्स है वो हार्ट मसल के अंदर नहीं जाना शुरू होती है. All right. So the impulse, the normal pacemaker of the heart is known as the SA node. SA node क्यों होता है normal pacemaker? SA node जो है वो हमारे हार्ट का normal pacemaker इसलिए होता है. इसकी दो properties हैं. Number one, it has a property of automaticity. Automaticity का क्या मतलब है? ये automatically impulses generate कर सकता है. And number two, इसका जो impulse generate करने का rate है वो सबसे fast है. It is between 60 to 100 per minute. So it generates the impulses at a rate of 60 to 100 per minute, and this is what determines the heart rate. SA node से impulses जब start होती हैं, after the SA node action potential, they then travel to the AV node. AV node से travel करने के लिए इनके पास तीन pathways हैं, which are known as the anterior, middle, and posterior internodal pathways. एक node से दूसरे node के दरमियान के जो pathways हैं, internodal pathways. Once the impulse reaches the AV node, it stops there for some time. So there's a delay of the cardiac impulse at the AV node and also at the AV bundle. क्यों होता है? Anatomically इसका reason ये है कि AV node और AV bundle के अंदर gap junctions, आपने शायद सुना, gap junctions are low resistance pathways. वो बहुत कम होते हैं जिसकी वजह से जो इम्पल्स है वो यहाँ पे आके कुछ देर के लिए ठहर जाती है. देयर इज अ डिले. और उसके बाद जो इम्पल्स है AV बंडल के बाद वो फिर आगे राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस पर Purkinje फाइबर्स और वेंट्रिकुलर मसल में जाएगी. फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस डिले की? इट गिव्स टाइम फॉर वेंट्रिकुलर फिलिंग. अगर यहाँ पे इम्पल्स थोड़ी देर स्टे ना करती, जहाँ से एट्रिया से स्टार्ट हुई वेंट्रिकल्स तक आई और अगर एकदम से वेंट्रिकल्स में चली जाती तो एट्रिया को ब्लड पंप करके वेंट्रिकल्स में भेजने का टाइम ना मिलता. सो द physiological significance of AV nodal delay is to give adequate time for ventricular filling. अगर ये नहीं होगी, इम्पल्स किसी वजह से तेज आ जाएगी
तो वेंट्रिकल्स प्रॉपर्ली फिल नहीं होंगे, और जब प्रॉपर्ली फिल नहीं होंगे तो आगे ब्लड पंप नहीं करेंगे. So SA node is the normal pacemaker of the heart. Sometimes it happens that the SA node it stops functioning. There can be ischemia, infarction, कोई भी और inflammation हो सकती है, कोई भी abnormality हो सकती है जिसकी वजह से SA node जो है वो impulses generate नहीं करती. Then there are other ways to generate impulses in the heart. These are known as ectopic pacemakers. अगर SA node काम करना छोड़ देगी, then the AB node it starts to function as the pacemaker of the heart. जो एवी नोड है उसका इम्पल्स जनरेशन का रेट है बिटवीन 40 to 60 पर मिनट. अगर एवी नोड भी काम करना छोड़ दे, देन द एवी बंडल के बाद जो परकंडे फाइबर्स आते हैं दे कैन जनरेट द इम्पल्सेस, और उनका इम्पल्स जनरेशन का रेट है बिटवीन 15 to 40 पर मिनट. तो ये जो पेस मेकर्स हैं वो एक मिनट में कितनी दफा इम्पल्स जनरेट करते हैं, दिस इज व्हाट डिटरमिन्स आवर हार्ट रेट. सो अ नॉर्मल पेस मेकर इज एसए नोड. एसए नोड का नॉर्मल इम्पल्स जनरेशन का रेट क्या है, बिटवीन 60 to 100 पर मिनट. सो दिस इज आवर नॉर्मल हार्ट रेट. दिस इज अनदर थिंग वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट. मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, मैं नॉर्मली उनसे हार्ट रेट पूछती हूँ, एकदम से ठक्कर के जवाब आता है 72 बीट्स पर मिनट. मैं कहती हूँ रेंज बताएं, दे टेल मी 72 to 80 पर मिनट, कुछ 85 कह देते हैं. सो दिस इज रॉन्ग आंसर. द करेक्ट आंसर इज द नॉर्मल हार्ट रेट is between 60 to 100 per minute. 90 is not tachycardia, 95 is not tachycardia, 100 and above is tachycardia. Similarly, 75 is not bradycardia, 70 is not bradycardia, 65 is not bradycardia, 60 and lower is bradycardia. Anywhere between 60 to 100 is normal. All right. All right, so let's move on. So impulse जो मैंने ऐसे नोड में आपको एक्शन पोटेंशियल बताया था वो जनरेट हुआ, ट्रैवल डाउनवर्ड्स टू द एवी नोड, एवी बंडल जहाँ पे डिले हुआ थोड़ा सा, फिर वो बंडल ब्रांचेस और परकंडे फाइबर्स एंड इवेंचुअली reach to the ventricular muscle. So this is the direction of impulse generation. अभी हमने ECG पढ़नी है. Keep this in mind. जहाँ से शुरू होगी it will travel in this direction downwards from the base to the apex of the heart. All right, so this depolarization and repolarization, which are the electrical events in the heart, अगर हम इनका graphical record देखें तो they give rise to what we call the ECG. So let's look at this. कि ECG के different segments हैं वो किस तरह बन रहे हैं. This was the SA node. SA node is present in the right atrium, in the posterolateral wall of the right atrium. यहाँ से impulse generate हुई, जो तीन आपको green lines नजर आ रही हैं, this is the anterior middle and neural pathways. उसके बाद वो AV node तक पहुंची. ये जो आपको नजर आ रहा है ये this is known as the Bachmann bundle. Bachmann bundle क्या है, SA node right atrium में है. Right atrium से left atrium तक इम्पल्स पहुंचाने के लिए हमारे पास जो कंडक्टिंग पाथवे है, दिस इज नोन एज द बैकमैन बंडल. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि द नॉर्मल डायरेक्शन फॉर द ट्रैवल ऑफ द कार्डियक इम्पल्स इज दिस. ठीक है, यहाँ से यहाँ इफ आई कैन पेंसिल, यस, ऐसे ट्रैवल करना. Right. जब भी इम्पल्स इस रूट को फॉलो करती रहेगी हमारे पास ईसीजी में पॉजिटिव वेव्स आएंगी. जहां पे भी पॉइंटर दिस, ये जो हाथ है ये आपको नहीं नजर आ रहा, दिस इज मूविंग. कैन यू सी इट नाउ? All right. So the impulse जब भी वो, so the impulse started from here, it traveled to here. यहाँ पे जो normal axis है वो follow हो रहा है, so we get a positive wave. ये जो P wave, is the pointer, I can see the pencil. एक मिनट pointer के back, मुझे पहले भी नजर आता है. Anyway, so where were we? We were talking about the normal axis or the normal direction of the travel of the cardiac impulse.
impulse started from the SA node here and it went to the AV node. यहाँ पे it is traveling the normal axis, it is following the normal axis, जिसकी वजह से हमारे पास ECG पे एक positive wave आती है, which is called the P wave. So P wave signifies atrial depolarization. यहाँ पे आके जब इम्पल्स यहाँ पे आती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ब्लू के बाद थोड़ा सा ऊपर जा रही है, ये जब सेप्टम आते हैं ना तो इम्पल्स इट ट्रेवल्स अ लिटिल बिट टुवर्ड्स द लेफ्ट, एक्सिस से डेविएट हो गई. जब एक्सिस से थोड़ा सा डेविएट हो गई तो हमारे पास एक नेगेटिव वेव आई विच इज वी कॉल द क्यू वेव. यहाँ पे आके इसके बाद इट अगेन स्टार्ट्स टू ट्रेवल डाउनवर्ड्स, जो नॉर्मल एक्सिस है उसको फॉलो करना शुरू कर देती है, ड्यू टू विच वी गेट दिस बिग पॉजिटिव वेव विच इज नोन एज द आर वेव. जो ईसीजी पे वेव्स का एम्पलीट्यूड होता है ना, जो साइज होता है, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कार्डिक चैम्बर जिसमें से वो ट्रेवल कर रही होती है. एट्रिया का साइज छोटा सा होता है, उसकी वेव छोटी सी होती है. जो वेंट्रिकल्स है उनका मास बड़ा है, इसलिए उनकी जो वेव है वो बड़ी सी है. यहाँ पे आके क्या हुआ, वंस द वेव इट रीचेस द एपेक्स, यहाँ से इट स्टार्ट्स टू ट्रेवल बैकवर्ड्स. तो अब क्या हुआ, एक्सिस से फिर उल्टा चलना शुरू हो गया. जब उल्टा चलना शुरू हो गया देन इट गिव्स राइज टू द एस वेव. सो टुगेदर QRS waves, जिनको मिला के कहते हैं QRS complex, and together they form they represent ventricular depolarization. Ventricular depolarization के बाद then starts the ventricular repolarization. Ventricular repolarization की direction भी again it is from the base towards the apex. जो आपको yellow arrows लगे हुए नजर आ रहे हैं ये भी downwards होती है. So because it is again following this direction downwards and towards the apex, so it again gives rise to a positive wave. So these are the normal waves on the ECG. P wave, atrial depolarization, QRS complex, ventricular depolarization. जो atrial depolarization की wave है वो QRS complex के अंदर ही होती है, मैं अलग से नजर नहीं आती. QRS complex इतनी बड़ी सी wave है, उसके अंदर atrial depolarization की छोटी सी wave, it gets merged in it and we cannot see it separately. यहाँ पे आप ये देख रहे हैं J point. J point क्या है? J point is the difference. J point, J का मतलब है junction point. It is the junction between ventricular depolarization and repolarization. J point की क्या इंपॉर्टेंस है? ECG के अंदर जो डिफरेंट चीजें हम मैंने वेव्स आपको बता दी. वेव्स के अलावा ECG के अंदर दो और चीजें होती हैं, एक होती हैं सेगमेंट्स और एक होती हैं इंटरवल्स. Segments क्या होती हैं? Segments are the straight lines, the isoelectric lines. Iso means same and electric means electric. So isoelectric segments means कि यहाँ पे कोई भी fluctuation voltage की नहीं हो रही है, constant है. जब segment के अंदर हम एक या एक से ज्यादा wave include कर देते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं interval. So segment is the isoelectric line, the straight line. And the isoelectric segment plus one or more waves, it is what we call the interval. तो ECG को अगर हम स्टडी करें तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है, this is the PQ segment. PQ segment is from the end of the P wave to the start of the QRS complex. इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी ये इंपॉर्टेंस है जब हम जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन और मायोकार्डियल इस्कीमिया है उसके अंदर जो ST सेगमेंट का एलिवेशन या डिप्रेशन होता है, पैथोलॉजी में पढ़ेंगे. जब हमें देखना होता है कि ST सेगमेंट एलिवेट हुआ है या डिप्रेस हुआ है तो हम उसको PR सेगमेंट के रेफरेंस से देखते हैं. दिस इज द ST सेगमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द S वेव टू द स्टार्ट ऑफ द T वेव. हम इसको PR सेगमेंट के रेफरेंस से देखते हैं कि ये आइदर एलिवेटेड है या डिप्रेस्ड है, और हम J पॉइंट से वो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं कि ST सेगमेंट जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस. एक और जो इम्पोर्टेंट इंटरवल है दैट इज नोन एज द PR interval. PR interval क्या है? PR interval is PR segment plus the P wave. So it is PR interval is from the beginning of the P wave to the beginning of the QRS complex. और ये क्या टाइम है? ये वाला टाइम है जिसमें एट्रिया की डीपोलराइजेशन हो रही है और यहाँ पे जो इम्पल्स है उसका AV नोड के ऊपर डिले हो रहा है. PR सेगमेंट में ये इंटरवल्स हो रहे हैं, ये वाले एक्शंस हो रहे हैं. जो नॉर्मल ड्यूरेशन है PR इंटरवल की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. PR इंटरवल की नॉर्मल ड्यूरेशन जो है इट इज बिटवीन 0.12 to 0.2 सेकेंड्स.
बुक्स में आप पढ़ेंगे जो सब स्टैंडर्ड बुक्स जो की बुक्स हैं हम देखेंगे वहाँ पे 0.1 पी की ड्यूरेशन लिखी होगी 0.16 सेकेंड. दिस इज अगेन इनएक्यूरेट. यस इट इज फॉलोइंग बिटवीन द रेंज, लेकिन it is very important that you know the exact range. The exact range is between 0.12 to 0.2 seconds or 120 milliseconds to 200 milliseconds. अगर हम उसको milliseconds में देखें, ये हार्ट ब्लॉक्स के डायग्नोज करने के लिए ECG इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिमेंबर दिस पीआर इंटरवल की नॉर्मल ड्यूरेशन. जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसकी नॉर्मल ड्यूरेशन इज 120 मिलीसेकेंड्स. अगर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही है तो ये बड़ा भी हो सकता है. Here's another slide of ECG showing the different waves, intervals, and segments. This is more clear. So this is the P wave. From the start of the P wave to the start of the QRS complex is the PR interval, or जहाँ पे end of P wave to the start of QRS complex is the PR segment. This is whole is the QRS complex, 2 negative waves and 1 positive wave. This is the ST segment, the isoelectric segment, जिसके अंदर वेंट्रिकुलर्स अभी डीपोलराइज हो चुके हैं पूरे, और दिस इज द वेंट्रिकुलर repolarization wave. On the y-axis, 5 small squares, they represent 0.5 millivolts, and on the x-axis, 5 small squares, they represent 0.2 seconds. So this is about the normal ECG जो जितनी आपको पता नहीं चाहिए. This is about it. हाँ यहाँ पे पिछली वेव पे मैं एक आपको बतानी थी जो जहाँ पे बनी. This is the U wave. U wave जो है वो हाइपोकैलिमिया में आती है. एक और तरह की वेव होती है जो उसे कहते हैं डेल्टा वेव. डेल्टा वेव कब आती है? Sometimes it happens if we go back. नॉर्मली जो इम्पल्स है वो ऐसे नोड से एबी नोड के तक ट्रैवल करने के लिए इंटरनोडल पाथवेज के थ्रू आती है, बट समटाइम्स इट हैपेंस दैट देयर इज एन एबनॉर्मल पाथवे व्हिच द इम्पल्स फॉलोज. वो सबनॉर्मल पाथवे की वजह से क्या होता है, द इम्पल्स इट रीचेस द एबी नोड मोर क्विकली देन इट शुड. दिस इज लाइक अ शॉर्टकट पाथवे, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स हैं वो अपने वक्त से पहले डीपोलराइज होकर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं, एंड द वेंट्रिकल्स डू नॉट गेट एडिक्वेट टाइम फॉर फिलिंग. दिस condition is called what we call Wolff-Parkinson-White syndrome. It's called Wolff-Parkinson-White syndrome. ये फर्स्ट एड में दिया हुआ है, आप प्लीज पढ़ लीजिएगा. And the ventricles they do not get adequate time for filling. इस कंडीशन में जो ECG है उसमें एक वेव आती है जिसको कहते हैं डेल्टा वेव. डेल्टा वेव क्या होती है?